वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, एटम्स के बारे में। तो ये अभी आपका इंट्रोडक्शन क्लास ही है, कैसे जो है इसमें जे थॉमसन और उनके जो साथी थे रदरफोर्ड के कामों को बाकी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया। वी विल सी a typical graph of the total number of the alpha particle scattered at a different angle in a given interval of time. Okay, in figure 12.13 this is the figure. Okay, a dot in this figure represent a data point and the solid curve is the theoretical prediction based on an assumption that the target atom has a small dense positively charged particles, sorry, nucleus. Many of the alpha particles pass through the foil. It means that they do not suffer any collision. Only about 0.14% of the incident alpha particles scattered by more than 1 degree and about 1 in 8,000 deflected by more than 90 degree. Rutherford argued that to deflect the alpha particle backwards, it must experience a large repulsive force. This force could be provided if the greater part of the mass of the atom and positive charge be concentrated tightly at its entire. Then the incoming alpha particle could get very close to the positive charge without penetrating it, and such close encounter would result in a larger deflection. Okay, this agreement supported the hypothesis of the nuclear atom. This is why Rutherford is credited with the discovery of the nucleus. तो हम लोग कह सकते हैं कि रदरफोर्ड को ही डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का दर्जा मिला। ओके, आज का क्लास यहीं ख़त्म होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले क्लास के लिए वेट करिए अगले दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।